Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 13.3 up to question number 5. Now in this video we are going to move ahead from that. That means we are now going to discuss this video from question number 6, right? So what this question number 6 actually is, let me just read it first. So यहाँ पे आपको क्या given है? The slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. So यहाँ पे आपको slant height given है, which is represented by L, that is 25 meter. So let me first write down what is given to us in this question. So सबसे पहले हमें क्या given है? Slant height, right, which is denoted by L. So कितना given है आपको यहाँ पे? 25 meters. Then further हमें base का diameter given है. So let me just write diameter of base. So that is given to us as 14 meter, right? So इसको किससे represent करते हैं? D से. Now जैसा कि हमें diameter पता है तो radius कैसे निकलती है? Diameter के half करके, right? So that means radius क्या हो जाएगी? 14 का half क्या होगा? 2 7 जा 14. So 7 meter, right? So ये आपके पास क्या आ गया? Radius आ गई. Now let us move further. अब देख सकते हैं आप, we have to find out the cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 210 per 100 meter square. So let me just explain you. इससे पहले मैं यहाँ पे एक rough diagram बना लेता हूँ. Like you can see this is a conical tomb like this. अब हमें base का diameter given था. You can see that is 14 meter, right? Then हमें यहाँ पे ये जो slant height है L, that is given 25 meters. So ये हमें यहाँ पे given है, right? So now remember हमें यहाँ पे निकालना क्या है? सबसे पहले curved surface area of this conical tomb, right? क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें पता है जो white washing होगी वो इसके curved surface area पे होगी, यानी outer हिस्से पे, right? So पहले मैं इसका curved surface area निकालूंगा. You can see that will be in meter square, right? अब यहाँ पे हमें कॉस्ट निकालनी है कि कितना कॉस्ट लगेगी इस कॉनिकल टॉम को व्हाइट वॉश करने में, राइट? अगर हमारे पास यहाँ पे रेट गिवन है, यू कैन सी रुपीज 210 फॉर पर 100 मीटर स्क्वायर. सो यानी अगर मैं सपोज इतना एरिया ले लेता हूं, ये कितना है? 100 मीटर स्क्वायर. सो इसका कितना चार्ज है? रुपीज 210. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर का फिर चार्ज कितना हो जाएगा? 210 डिवाइड बाय 100. सो ये हो गया चार्ज ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. सो इतना सा एरिया अगर मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर है तो इसका चार्ज कितना है? 210 डिवाइड बाय 100. सो दिस इज द चार्ज पर मीटर स्क्वायर, राइट? सो नाउ लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉनिकल टॉम, राइट? सो यू कैन सी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम इज पाई आर एल, राइट? सो हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7. Now remember curved surface area of cone क्या होता है? Pi r l. That is the important thing, right? So यहाँ पे radius हमने यहाँ पे find out की, that is 7. Now L is the slant height. We know already that is 25, right? Now you can see 7 1 is 7, 7 1 is 7. Now 22 को हम किससे multiply करेंगे? 25 से. So 22 into 25. Let me just multiply. So 5 2 is 10. 1 carry. 5 2 is 10. And 1 11, right? Then 2 2 is 4, 2 2 is 4. So your total will be 550, right? So ये आ गया हमारे पास यहाँ पे इसका curved surface area 550 meter square, right? So this is the curved surface area of this conical tomb. अब बढ़ते हैं आगे to find out the cost of whitewashing this conical tomb curved surface area, right? So now you can see हमें यहाँ पे क्या गिवन है? You can see rate of, or you can say the cost of, right? That will be better. So cost of whitewashing, you can see 100 meter square is given to us as 210 rupees, right? Then आपको मैंने बताया कि अगर 100 meter square का 210 rupees है, so 100 meter square को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 into 100. अब 1 मीटर स्क्वायर का निकालने के लिए मैं इस 100 को कहां भेज दूंगा? डिवाइड में. सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग
you can see 1 meter square area will be 210 divided by 100 rupees, right? अब अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करने के लिए इतना चार्ज है, तो टोटल जो कर्व सरफेस एरिया है जिसको हमने व्हाइट वॉश करना है, उसको व्हाइट वॉश करने का कितना चार्ज होगा? सो देन यू कैन सी देन कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, यू कैन सी 550 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी, यू कैन सी मैं क्या करूंगा, इससे 550 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट? सो 550 इंटू द चार्ज ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग एरिया, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट. नाउ यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई 55 बाय 21. सो लेट मी जस्ट डू दैट. So 55 into 21, so 1 into 55 is 55, then 2 into 5, that is 10, 1 carry, 2 into 5 is 10, plus 1, 11, right? So 5 as it is, then you can see 5, then 1, 1. So you can see 1155 rupees will be the charge here of whitewashing the curved surface of this conical dome, and that is what we have to find out in this question. So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So you can see this time question number 7 is given to us as, you can see a joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. So यहाँ पे एक joker cap है जो कि किस फॉर्म में है? राइट सर्कुलर कॉन. So let me just draw a joker cap which is in the form of right circular cone, right? So this is the shape of a cone. So ये एक joker cap given है. Now हमें यहाँ पे given क्या है? जो base की radius है. So let me just draw the radius here. So ये radius जो है that is given to us as 7 centimeter, right? Then further हमें क्या given है? Height given है that is 24 centimeter, right? So let me just join the vertex with the center of the base circle, right? So ये जो है आपके पास that is known as the height. So ये कितनी given है आपको? 24, you can see centimeters, right? So this is the height here. Now we have to find out the area of the sheet required to make 10 such caps. So इसी तरह की कितनी caps और चाहिए? 10 such caps चाहिए, बनानी है हमें. तो हमें sheet जिससे ये cap बनी है उसका टोटल 10 कैप्स बनाने का कितना एरिया होगा शीट का, वो बताना है, राइट? तो सबसे पहले एक कैप बनाने के लिए जितनी शीट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी? जितना इस कैप का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, यानी कि इस कॉनिकल कैप का जितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा. आप देख सकते हैं कैप किससे बनेगी? सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया से तो बनेगी, एंड बीच में तो खाली स्पेस ही होता है. सो यू कैन सी अ कैप शुड हैव टू बी, यू कैन सी होलो फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज हम कैप को अगर वियर करेंगे तो वो हमारे हेड के ऊपर फिट होनी चाहिए. सो इट इज ओपन एट द बेस, राइट? सो हमें क्लोज्ड कैप नहीं चाहिए, ओपन कैप चाहिए. तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वही होगा जो कि शीट जितनी रिक्वायर्ड होगी, राइट? सो जितनी शीट रिक्वायर्ड होगी, सो यू कैन सी शीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 cap is equal to curved surface area of the conical cap, right? That will be better, right? So हमें यहाँ पे क्या निकालना है? सिर्फ curved surface area, and we know curved surface area is calculated by pi r l, right? So हमें यहाँ पे l जो है वो missing है, हमें नहीं पता. So first of all we have to find out, you can see the slant height of this conical cap, और हमें पता है कि slant height l जो है, आप देख सकते हैं ये एक राइट सर्कुलर कोन है, तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करती है. यू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट आई हैव टोल्ड यू दैट L square is equal to R square plus H square, right? So we know, you can see that L square is equal to R square plus H square. So यहाँ पे आप देख सकते हैं L हमें निकालना है, so keep it as it is. Now radius is given to us, that is 7 centimeter. You can see here, right? So यहाँ पे 7 रख देता हूँ, plus height also given to us, that is 24. So अब यहाँ पे आप देख सकते हैं L square क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 into 7, that is 49, plus 24 का स्क्वायर. Now 24 into 24, let me just check out. So 4 4 is 16, 1 carry, 4 2 8 and 1 9. Then 24 2 ja 48, right? So that will be, you can see 6, 9 and 8 17, and that will be 5. So 5 7 6, right? Now we have to simply add them. So 49 plus 5 7 6 9 plus 6, that will be 15.
1 carry 7 plus 5, that will be 12 and that will be 6, right? So together it will be 625. So यहाँ पे कितना आ गया L square. Now let me just rub this. अब further आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में, सो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 625, राइट? ना मुझे पता है 625 क्या होता है, 25 इंटू 25, राइट? सो अब इसलिए ये पेयर बन रहा है तो 25 आउटसाइड आएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25, राइट? सो 25 सेंटीमीटर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्लैंट हाइट. सो ये हमने फाइंड आउट कर ली. नाउ हमें पता है यहाँ पे रेडियस हमें ऑलरेडी पता थी और स्लैंट हाइट हमने फाइंड आउट कर ली. नाउ वी कैन कैलकुलेट द curved surface area of a conical cap, right? So let us do that, but first let me make some space. Now remember, we have to find out the area of sheet required to make 10 such caps. This is the motto here, right? So now you can see sheet required to make one cap is equal to curved surface area of conical cap, right? So curved surface area कैसे कैलकुलेट होगा, पाई आर से, पाई आर एल. सो पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 22/7, right? Now further you can see into radius. So यहाँ पे radius हमें already given थी, that was 7. You can see into L which is slant height जो हमने कैलकुलेट की, that is 25. So 7 1 is 7, 7 1 is 7, right? Now 22 into 25. So what it will be? You can see that will be 5 to the 10, 1 carry 5 to the 10, 1 11, then 22 to the 44, so that will be 550, right? So यहाँ पे जो आंसर आ गया आपके पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, इस कॉनिकल कैप, एक कॉनिकल कैप का कर्व्ड सरफेस एरिया. सो दिस इज आल्सो द शीट रिक्वायर्ड टू मेक वन कैप. सो ये क्या होगा, इतनी शीट लगेगी टू मेक वन कॉनिकल कैप. सो हमें कितनी कैप चाहिए, 10. सो वो उसमें कितना एरिया होगा, मैं इसको डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, राइट? सो क्वाइट सिंपल. नाउ लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस. सो नाउ यू कैन सी एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 such caps is, you can see 550 into 10. So that will be 5500. So दो zeros आ जाएंगी. So that will be the area of sheet required to make 10 such conical caps, and that is what we have to find out in this question. So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now, which is going to be the last question of this exercise, and it is important, so understand it very carefully, right? So let us move on to this. So यहाँ पे इस question number 8 के अंदर आपको क्या given है? Let me just read it. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made up of recycled cardboard, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे एक bus stop है जिसके remaining part of the road को बंद किया गया by, you can see, applying 50 hollow cones. आपने देखे होंगे येलो कलर के कॉन्स पड़े होते हैं टू ब्रेक द रोड, राइट? सो उसको एरिया को बैरिकेड करने के लिए, ताकि कोई अंदर एंटर ना हो, उसके लिए कॉन्स लगाए जाते हैं, द होलो कॉन्स. ये जो कॉन्स हैं, ये कितने अमाउंट में, 50 कॉन्स, राइट? टू, यू कैन सी, बैरिकेड द बस स्टॉप फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड. सो रोड से बस स्टॉप को बंद करने के लिए आगे 50 होलो कॉन्स लगाए हुए हैं, राइट? सो नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉ वन कॉन हियर. So you have seen definitely these kind of structures placed on the road. आपने देखा होगा बहुत बार. So now you can see they are 50 in amount. So ये 50 hollow cones जो है, you can see are just placed over to barricade the road. Now you can see हमें यहाँ पे given है that each cone has a base diameter. So यहाँ पे हर cone का जो base diameter है, that is given to us as 40 centimeters, right? Now and also the height is given to us as 1 meter. So let me just draw this. So height कितनी है आपके पास, 1 meter. Now you can see the difference here कि height जो है वो मीटर में है और जो diameter है वो सेंटीमीटर में है. So we have to convert one from these two, right? But let me just check out कि हमें यहाँ पे जो करना है इस क्वेश्चन के अंदर, that is if the outer side of each of the cones you can see is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें
सभी के सभी 50 कोन्स के आउटर एरिया को पेंट करना है, और हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग गिवन है, दैट इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। सो अगर मैं छोटा सा हिस्सा ले लूं इसका, ये 1 मीटर स्क्वायर, सो इसका कॉस्ट कितना है, ₹12। नाउ यू कैन सी हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है कि हमें कॉस्ट मीटर स्क्वायर में दी हुई है। सो यहाँ पे हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट, दैट विल बी बेटर। सो यहाँ पे अगर मैं इस डायमीटर, लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन हियर। सो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, द हाइट ऑफ कोन that is 1 meter, right? So ये मीटर में ही है, that is okay. Now you can see the diameter that is represented by D, that is given to us as 40 centimeter. Now हमें पता है कि अगर diameter 40 है तो radius क्या होगा, diameter upon 2, so that will be simply 20 centimeter, right? अब मुझे इस 20 centimeter को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, so we have to divide this by 100, right? So आप देख सकते हैं ये 0 से 0 cancel out. Now 1 0 यानी 1 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल, so 2 से पहले डेसिमल लगा, so 0.2 मीटर, दिस विल बी द रेडियस इन मीटर्स, राइट। सो हमारे पास रेडियस भी आ गया। नाउ यू कैन सी वी आल्सो नो द हाइट। नाउ हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही हमें क्या करना है, पेंट करना है, राइट। सो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है, पाई आर एल। सो यहाँ पे हमारे पास एल जो है दैट इज द स्लैंट हाइट विच इज मिसिंग हियर, राइट। सो हमें यहाँ पे रेडियस पता चल चुकी है, दैट इज 0.2 मीटर्स। नाउ हाइट भी हमें पता है, दैट इज 1 मीटर। Now we can calculate the slant height L by the formula. We know that is L square is equal to R square plus H square, right? Now let me just make some space above. So you can see हमें यहाँ पे L find out करना है, so keep it as it is. Now radius you can see is 0.2 square plus height is given to us as 1 meter, so 1 square, right? So L square. Now 0.2 का square क्या होता है, let me just show you how to find out the square easily, right? So 0.2 square means 0.2 into 0.2. Now remove the decimal, there will be 10 in the denominator because decimal के बाद एक digit है, so you can see ये remove हो गया। So यहाँ पे 2 into 2 कितना हो गया, 4, 10 into 10 100। Now दो zeros यानी दो digit से पहले 0, so यहाँ पे एक ही digit है तो एक 0 place कर लेता हूँ, 1 2 then decimal, so 0.04 will be the square of 0.2. So 0.04 plus 1 का square क्या होता है, 1 ही होता है। Now further if I just see 1 plus 0.04, so अगर मैं 1.00 और 0.04 को ऐड कर देता हूं, so that will be 1.04, right? So इनका एडिशन क्या हो जाएगा आपके पास, 1.04। Now आप देख सकते हैं L स्क्वायर का स्क्वायर हटाऊंगा तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, राइट। सो हमें L कैसे मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1.04। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमें लास्ट में गिवन था कि स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 इज 1.02, राइट। सो ये कितना हो जाएगा इसका, 1.02 इन यू कैन सी मीटर्स। सो यहाँ पे स्लैंट हाइट पता चल गई, दैट इज 1.02 मीटर्स। नाउ हमें यहाँ पे L की वैल्यू पता है, रेडियस भी पता है, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज गिवन टू अस हियर एज 3.14। सो वी कैन नाउ फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, राइट। सो लेट अस डू दैट। Now you can see the curved surface area of one cone will be pi r l, right? So pi is 3.14 into radius. You can see that is 0.2 into L. That is what we have found out is 1.02, right? So now keep this as it is. क्यों मैं इसको सॉल्व नहीं करता यहाँ पे, मुझे पता है ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कॉन है। अब मुझे कितने का निकालना है, पहले 50 कॉन्स का, क्योंकि हमें 50 के 50 को क्या करना है, पेंट करना है, राइट। सो ये वन कॉन का कर्व सरफेस एरिया, अगर मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, यू कैन सी हियर, सो 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, इसको सॉल्व करने के बाद अगर मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करूं, सो दैट विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, राइट। यू कैन सी, सो मैंने डायरेक्टली इस पूरे को 50 से मल्टीप्लाई कर लिया विदाउट सॉल्विंग, राइट। नाउ further let me just tell you that अभी भी मैं इसको सॉल्व नहीं करता, because let me just make it a bit more easier, right? So हमें यहाँ पे given था that cost of painting the cones at ₹12 per meter square. So आपको पता है cost of painting इन सभी 50 कोन्स को अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का
चार्ज जो है वो 12 रुपीज है, सो ये 50 के 50 का जो कर्व सरफेस एरिया है इसको पेंट करने का चार्ज क्या होगा इंटू 12। सो मैं इन सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय यू कैन सी 12, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का चार्ज है 12 रुपीज। सो 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया ये था, अब मैंने 50 कोन्स के कर्व सरफेस एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 मीटर स्क्वायर के चार्ज के एरिया से, राइट। सो दैट विल बी व्हाट वी हैव टू सॉल्व हियर। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू नाउ सॉल्व। सो लेट मी जस्ट डू दैट। सो यहां पे डेसिमल रिमूव किया, दैट विल बी 10, डेसिमल रिमूव दैट विल बी 100 बिकॉज दो डिजिट्स हैं, अगेन 100, then you can see that will be as it is. So if I just remove these decimals here, so now what you have to solve is this. So यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 0 से 1 0 cancel out हो गया. Now if I just reduce this, so 5 20 जा 100, right? Now further 2 1 जा 2, 2 10 जा 20. Now if I just look at here, so denominator में 100 into 10, that will be 1000, right? अब numerator में क्या आपके पास 314 into 102 into 12, right? So 314 into 102, right? So 2 4 ja 8, 2 1 ja 2, 2 3 ja 6. Then 0 0 0. Then double multiply. So 1 into 3 1 4, that will be 314. So 8, then 2, 6 and 4 10, 1 carry, that will be 2 and 3. So 3 2 0 2 8, right? Let me just cross check. So 2 4 ja 8, 2 1 ja 2, 2 3 ja 6. Then you can see 0 3 times. So 1 into 3 1 4, 3 1 4. So 8 2 10 2 and 3, right? So अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 12 से. So if I just multiply 32028 by 12, so what it will be is 2 8 just 16, 1 carry, 2 to the 4 and 1 5, then 0 2 to the 4, then 2 3 just 6, right? So 1 को you can see multiply करूंगा 32028, right? So let me just add them. So 5 and 8, you can see that will be 13. 1 carry, then that will be 3, 4 and 6 and 2 8, then 3. So हमारे पास कितना आ गया आपके पास देख सकते हैं 384336. So यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है 3, so 3 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा डेसिमल. So that will be 384.336 rupees will be the charge you can see to paint all the 50 cones which have to be placed for barricading the bus stop, right? And that is what we have to find out in this question. So that was all in this question here as well as in this exercise.